Okay, Ayush, so let us start your snap into your fluid mechanics. अच्छा सबसे पहले आपने पास मुझे सिंपल से बताओ आइडियल गैसेस एंड आइडियल फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है? So ideal gas and ideal fluids. So ideal fluids is not having any viscosity, and हम्म, ideal gases follow the ideal gas law, that is PV is equal to nRT. So the forces of the forces intermolecular forces is very less in between the ideal gases. हम्म. They are some, and so do in the ideal fluids. Okay, and what is the value of the bulk modulus for both of these fluids? So bulk modulus. What is the value of the bulk modulus for both of these fluid, ideal fluid as well as the ideal gases? Sorry, that I don't know right now. अच्छा बल्क मॉडुलस रिप्रेजेंट क्या करता है? So bulk modulus represent the bulk motion of a fluid. So how well it will flow. बल्क मोशन. Yes, sir. अच्छा तो आपके पास अगर जैसे लेट अस सपोज इफ यू हैव अ सॉलिड बॉडी इन दैट केस डू वी हैव एनी काइंड ऑफ बल्क मॉडुलस वैल्यू? For a solid body. यस बिकॉज सॉलिड cannot flow ना. Yes, sir. हम्म. So no, so they will be not, because there will be no change in, for a rigid body there will not be any change in volume of that. So change on the application of pressure. ओके ठीक है. अच्छा सरफेस टेंशन क्या है? So हाउ डू यू डिफाइन द सरफेस टेंशन? surface tension is a property of the fluid by virtue of which the surface layer is seem to be in tension because of the unbalanced cohesive forces. ड्यू टू द अनबैलेंस्ड क्लोजिंग. ओके. एंड हाउ डज द सरफेस टेंशन वेरीज विद द टेंपरेचर? So surface tension decreases with increase in temperature. इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर. Decreases with increase in. डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर. ऐसा क्यों? So because when I increase the temperature, so the molecules that are there on the surface or even in the bulk, they will have some motion, and the as density decreases, so the surface tension will also decrease. ठीक है. अच्छा आपके पास यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन की कुछ assumptions बताओ. So first of all, Bernoulli equation is applicable in a single streamline if the flow is rotational. If it is flow is irrotational, we can apply the Bernoulli equation between two streamline. The flow should be steady, it should be incompressible, and the fluid should be ideal. अच्छा आपने जो पहले सबसे पहले बोला कि आप रोटेशनल फ्लो में नहीं अप्लाई कर सकते, ऐसा क्यों? So rotational flow में between two streamlines we can't apply. In a single streamline we can apply. ऐसा क्यों लेकिन? So because there will be some energy in the their motion, because they will rotate in the respective streamlines. So that's why difference in energy. अच्छा Because we ठीक है. have to make the energy constant according to the equation, Bernoulli equation. अच्छा ठीक है. अच्छा नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन और रेनॉल्ड इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? So in Reynolds equation we consider turbulent flow, also in combination of gravity, pressure, and viscous force. But in case of Navier-Stokes, we don't consider the turbulent force with turbulence. ओके ठीक है. अच्छा आपके पास यहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपने स्टडी करी होगी थर्मोडायनेमिक्स में, उससे बर्नौली Yes. इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाओ जरा. Okay. तो जो भी आप assumptions डिफाइन करोगे वो भी क्लियरली डिफाइन करो. Okay. यस. Visible, sir. अच्छा ये आपने कैसे ड्राइव करी है? इसमें So स्टेडी फ्लो I have एनर्जी इक्वेशन कहाँ है आपके पास? so I have taken the so it is Euler equation, I think. हाँ आपने आइलर इक्वेशन लिया, मैंने आपको स्टडी फ्लो से बोला था. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ पर है? So okay, I just got confused. Hmm. You have to use the first law of thermodynamics and have to drive the Oh, Bernoulli's equation. okay, sir.
Right now, I'm not able to recall it. So, correctly. ओके ठीक है, नो इश्यू। अच्छा, आपके पास यहाँ पे अगर सिंपल से लेटर से डिफाइन करें लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, हाउ डू यू Okay, डिफरेंशिएट sir. बिटवीन दीस टू? So, a laminar flow is defined when the streamline are in well arranged, if the fluid layers are in flow in well arranged form. But when there is mixing in between them, we call it turbulent. Otherwise, it is laminar. Okay. And what kind of forces are dominating in the case of laminar flow as well as the turbulent flow? So, in laminar flow, the viscous forces are dominant The viscous forces are dominant. Okay. near to the boundary of the Hmm. surface, or actually surface of the object. And in case of Okay. Hmm. in the turbulent flow, the viscous forces are not dominant. Turbulent forces are dominant. Turbulent flow. What is the meaning of turbulence forces? What are the So characteristics of the turbulence forces? sorry, this I'm not able to recall it. ओके ठीक है। अच्छा, आपके पास रेनॉल्ड नंबर एंड वेबर नंबर, कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप दोनों को? The Reynolds number is defined as inertia force upon viscous force, and Weber force is inertia force upon gravitational force. तो मैथमेटिकली ओके ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर हम स्टडी करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इन द केस ऑफ लैमिनार एंड टर्बुलेंट। ओके, yes sir. सो जस्ट टेल मी what are the various parameter on which the friction factor depends upon? So first of all depends upon the geometry. Geometry. Yes sir, geometry of the component in which the flow is happening, and density of the fluid. And basically we write it for laminar is 64 upon RE, and for Reynolds number पे depend करता है. So it depends on density, velocity of the fluid, and the diameter, and all of that geometry. Okay, just draw a graph between the friction factor and the Reynolds number. Okay, for the laminar as well as the turbulent flow. Okay. ऐसे यहाँ देखिए यहाँ पे दिया So it should be of decreasing slope for both of them, but I'm not able to. The curve should be linear Okay, or like. अच्छा ठीक है। आपके पास यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो के केस में क्या होगा? So टर्बुलेंट it is. के केस में ग्राफ शो करो। So it would be 0.316 upon Reynolds number raised to power 1/4, but the graph is I'm not able to. So let us suppose if the Reynolds number value is more than 4 crore. In that case, how is it going to depend upon the Reynolds number? 4 crores. So it should be of decreasing slope, linear decreasing slope. Linear decreasing slope. Yes, Are you sir. sure? So because the inversely proportional है इसलिए. Okay. Okay, what is laminar sublayer? Sir, laminar sublayer is when our fluid flow moves from transitional zone to turbulent zone. So initially, the layer which is in contact with the surface of the object is the laminar sublayer, and then we have transitional layer. Over that, we have turbulent flow. So And what is the velocity distribution of velocity profile in the case of laminar sublayer? So the velocity profile changes rapidly in case of laminar sublayer. Because of that, like if the value is 10, then the value becomes 40 gradually. But Oh, that is, just tell me one thing. Is it going to be very linearly or a parabolically? In the laminar parabolically, flow? sir. The laminar Parabolically, sublayer, sorry. In the laminar laminar sublayer. sublayer, yes, sir. Laminar sublayer, it will vary parabolically and a steep parabola, and then it becomes a bit constant, like linear, Okay. straight line. Yes. Okay, that is okay. Okay. Okay, and what are the various devices which are used for the measurement of the flow rate of the fluid whenever it is flowing through the pipe? Going through the pipe. So, sir, we can use Venturi meter, orifice meter, for that, and various flow meters that in. Orifice meter, flow meter. Okay. Yes. So, yes, so yeah, these three I know. Okay.
Okay, is pressure a scalar quantity or a vector quantity? So it is a scalar quantity. How can you say that? So because it always act normal to the surface on which it is acting, so we keep it as constant because So it can you always provide me do any that. mathematical proof of it? Mathematical proof. Yes, the pressure is a scalar quantity. Which is scalar quantity. Uh, yes, sir. So I can tell you it by an example. We study about the hydrostatic forces in case of fluid mechanics when body, even if it is a straight body or it is curved, even the force pressure No, act that on is the okay. perpendicular. We always show the pressure perpendicular to the Right. surface. Okay, but why? Because there you are defining that velocity has, pressure has a particular direction. That means the pressure has to be vector quantity. No, it is But not you a are vector saying quantity because yes. we consider But it to be. the example you are giving me is defining that the pressure has a specific direction that is normal to the surface. It is always That like means that. Some things are universal truth, so we keep it as okay. like sun Okay. rises from east. Just So let us suppose if there's a plate and the force is acting at some angle to the plate. Okay. In okay. that case, so what will be the direction of pressure? A force is acting at an angle to the plate, then Yes. the What pressure. will be the Okay. yes? What will be the direction of pressure? So we resolve it in two components, then we will study it. ओके ठीक ओके आयुष रेडी पॉइंट ऑफ फीडबैक देखो आप आंसर जो प्रोवाइड कर रहे हो ठीक प्रोवाइड कर रहे हो कोई इश्यू नहीं है कुछ आपके पास मिस्टेक करी है ठीक है ना तो उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना बाउंड्री लेयर में जो आपने लेमिनार सब लेयर का मुझे बताया ठीक है ना वो थोड़ा करेक्ट था वैसे वो एक्चुअली में करेक्ट ही आपके पास यहाँ पे लेकिन जो हम अज्यूम करते हैं वहाँ पर आप लीनियर प्रोफाइल अज्यूम करते हो ना कि पैराबोलिक इवन दो होता पैराबोलिक है लेकिन आपके पास बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है सॉरी लेमिनार सब लेयर की थिकनेस जो है बहुत कम होने की वजह से आप वहाँ अज्यूम कर रहे हो कि वो आपके पास क्या होगा लीनियर आपके पास रहने वाला है सेकंड आपके पास प्रेशर के जो रिलेटेड मैंने आपसे पूछा कि प्रेशर एक स्केलर है स्केलर क्वांटिटी मैथमेटिकल प्रूफ अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आपसे दैट मींस इट इज अ पास्कल लॉ ओके पास्कल लॉ टेल्स यू अबाउट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द प्रेशर ओके सो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना वहां से आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि हर एक डायरेक्शन पे जो प्रेशर का मैग्नीट्यूड रहने वाला है वो सेम रहने ओके एंड उससे पहले आपने मुझे जो सबसे पहले जो मैंने आपसे पूछा आइडल फ्लूइड एंड आइडल गैसेस ठीक है बल्क मॉडल्स देखो यार बल्क मॉडल्स एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता होनी चाहिए थी ठीक है फ्लो से रिलेटेड आपके पास वो यहाँ पे नहीं है वो रिलेटेड है कि अगर आप यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो किसी बॉडी के ऊपर तो कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है तो इफ यू सी द liquid idle fluids are basically incompressible in nature okay so no matter how much pressure you apply it is not going to change its volume No, not going okay to change. that means the bulk modulus is going to be infinite in that case Okay. okay but practically its value is very very high for example in the case of water if we there the value is around 200 megapascal okay which is far much greater than the air okay तो थोड़ा ध्यान रखना bulk modulus compressibility inversely proportional यहाँ पे होगी ठीक है ना और बेसिक डिवाइसेज जो आपने मुझे नाम बताए थे वहां पे कुछ और ध्यान रखना वेंचुरी मीटर ऑरिफिस मीटर फ्लो मीटर रोटा मीटर नोजल सॉरी नोजल नहीं फ्लो मीटर आपके पास यहाँ पे रोटा मीटर ये कुछ आप डिवाइसेज वहाँ पे यूज कर ओके और कुछ डाउट आपको कुछ पूछना हो सर आरसीएफएल के लिए किस सब्जेक्ट्स का रहेगा ज्यादा जो कोर है देखो हमारे कोर आपके पास जो कोर है वही मेन है लेकिन इतना डिफिकल्ट आपके पास इंटरव्यू वहाँ पे रहता नहीं इसका ठीक है तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे एचआर पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा और यहाँ पे टेक्निकली फोकस करना पड़ेगा ठीक है ना और आपके पास मैथमेटिकल डेरिवेशंस अगर आप देख सकते हो थोड़ी सी बेसिक तो उसको देख लेना इन केस अगर आपको करने को बोल दिया तो फिर आप यहाँ पे रेडी रहेंगे ठीक है क्योंकि उसका इंटरव्यू वैसे बीपीसीएल आईओसीएल की तरह रहता है सिंपल आपको ज्यादा डिफिकल्ट ओके ओके तो प्रेजेंटेशन स्किल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहीं पर मेन आपके पास यहाँ पे लड़ाई होने वाली है ठीक है सर ओके थैंक यू सो मच थैंक यू